And welcome back to the another tutorial of our Java programming series. In the last video we will cover first practice set using operators. Now in this video we will discuss about the decision making statements. It's a new chapter, new topic. So first I will open PDF. So what is a decision making statement? Give me 1 minute. So what is a decision making statement? It decides the direction or flow of a program. मतलब आप क्या करना चाह रहे हो प्रोग्राम के थ्रू, इस प्रोग्राम में मतलब कोई सा भी प्रोग्राम हो वो एक आपको एक डायरेक्शन दे रहा है, आपको एक फ्लो दे रहा है कि आप इस प्रोग्राम में क्या करना चाह रहे हो, तभी हम डिसीजन मेकिंग में काम लेते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करें, जैसे कोई भी आपके पास छोटा प्रोग्राम हो, उस प्रोग्राम में आपको क्या करना है, किस वे में चलाना है, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन। या कोई सा भी डायरेक्शन, मतलब अगर आपके पास दो चीज़ें हैं, दोनों में से कोई सी भी एक चीज़ आपको प्रिंट करवानी है, ट्रू करवानी है, तो वो क्या एक डायरेक्शन हो गई, एक प्रोग्राम की डायरेक्शन हो गई, एक फ्लो हो गया कि इस प्रोग्राम के अंदर हमें ये सब चीज़ें करनी है। Like here, decision making or a control statement are the statement in a program that can be control the execution order of the statement. मतलब decision making और control statement वो एक control statement or this statement in a program that can be control the execution order of a statement. जो भी आप करवाना चाह रहे हो प्रोग्राम के माध्यम से वो उसको मतलब that control the execution order of a statement, वहाँ तक उसको कंट्रोल करा है। जो भी आपके स्टेटमेंट है, जो भी आपको आउटपुट चाहिए, द ऑर्डर मतलब जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देना चाहोगे इस प्रोग्राम के अंदर, उसके हिसाब से चलेगा। जैसे कि द ऑर्डर इन विच द इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम गेट एग्जीक्यूटेड, मतलब आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए प्रोग्राम में, तो उस हिसाब से आपका प्रोग्राम चलना चाहिए। तो उन कामों के लिए मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर कंडीशन को चलाने के लिए आप यूज़ लेते हो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। दोनों में से एक कंडीशन चले सो तभी आप लेते हैं यूज़ में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। सो वी मे बी क्लासिफाई द प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट इनटू 3 कैटेगरीज। जो अगर हम देखेंगे प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट कितनी कैटेगरीज में होती है, 3 कैटेगरीज होती है। एक तो स्क्वेंस होते हैं और एक डिसीजन मेकिंग जो हम अभी पढ़ रहे हैं, एक होता है लूप। लाइक इफ फर्स्ट वन सिंपली प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन आफ्टर अनदर, मतलब क्या करता है प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट जितने भी वो लिखते हैं हम उनको एक के एक मतलब आफ्टर वन यू विल बी राइट एनी इंस्ट्रक्शंस, यू विल बी एग्जीक्यूटेड one by one line will be executed. But if you use a decision making consists of 2 more blocks, like you use an decision making if you have a like 2 blocks, only one will be executed. That is why you use a decision making statement. Like अगर आपके पास 2 ब्लॉक है, दोनों में से तो एक ही आपको चलाना है, तब आप लेते हो यूज़ में डिसीजन मेकिंग। Like if, else if, switch, etc. These are the decision making statements. So loop use and repeat a group of statements a certain number of times. For, while, do while, goto, and foreach. These are the loop you will be used for the statement. If you provides any kind of statement you want, our program will be around that time of numbers, repeated the time of numbers, so yours will be a loop. So first I will talk in this video decision making statements, then after I also cover a loop and other things. So decision making
If first one, if I will cover, if I will cover, so first one is an if, and then if else, then switch, and so on. Like, first, why are decision making statement need? Suppose we have to code a program in which the user enters a number, and if the number is less than 10, we print the message number is a less than 10, or number is greater than 10. Otherwise, in such a case, we have to make a decision based on the number and print the message accordingly. And here the decision making statement comes in use. So if you have a one condition, one number, if number is a less than or greater than that number, you want user's number. If your number and user number is match, then it will be, if your number and user number, it will be a greater than and less than, any one block will be executed. So that is why you need here a decision making statements. So अगर आपके पास दो ब्लॉक हैं, मतलब आपके पास यूज़र ने कुछ नंबर दिया, अगर वो आपके नंबर से कम है तो वो लेस देन हो गया, तो वो चलेगा। अगर वो उससे बड़ा हो तो वो ग्रेटर देन है, वो वाला पार्ट चलेगा। मतलब यहाँ पर आपके पास दो ब्लॉक है, दोनों में से किसी एक को आपको चलाना है, तो तभी जाकर आप यूज़ में लेते हो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का। फर्स्ट वन है इफ़। The if statement checks the given condition, and if the condition is true, then the block of code statement will be executed, otherwise not. मतलब अगर आप if use ले रहे हो, I will show example. I will example with this if. How can I use this if statement? So don't worry. First you will be try to understand why use if. The if statement checks the given condition, and if the condition is true, then the block of code will be executed, otherwise not. Like syntax of this if statement, like here, syntax if condition then statement. So first, giving like a little bit open, first I will notepad, so I will show with the example how to use this. Like right here, basic structure of our program. So write a main class public static void main. Right here, first I will save this, and then after so I will write a syntax of a if statement. Here I will create a one variable like a. Now check if a is greater than 1, so print a. So here will be a print a.
value of a. What will be a value present in a? So it will be a print here. Value of a. Okay. Here I will provide a variable. This is a if block. Use a block, it will be a cover, and this block, whatever, if your condition is true, so it will be executed. If the condition it will not true, and it will be not executed. Like I will provide here, if a value is constant value is 5, so the condition is true, a will be executed. This block will be executed, a block. Here Java C. Decision making statements. It will be a compile successfully, then Java execute this one, and then a will be a 5. This is a structure, and this is an example of using a if statement. Now this is a syntax. If the condition, if the statement checks the condition, and if the condition is true, then the block of code will be executed, otherwise not. So next one is a if else statement. It consists of two parts, block of statements, and only one of them gets executed based on the test condition. If the condition is true, then the code of statement block of if get execute, and if the condition is false, then the code of statement block else get executed. Like अगर आपके पास if else statement है, मतलब अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं है, मानो हमारे पास दो ब्लॉक है अभी, if else क्या करता है, दोनों में से एक ब्लॉक को, किसी भी ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाता है. अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो इट विल बी एग्जीक्यूट इफ पार्ट. इफ द कंडीशन विल बी नॉट अ ट्रू, देन गोस द एल्स पार्ट, एग्जीक्यूट ओवर एल्स पार्ट. अगर कंडीशन ट्रू तो इफ स्टेटमेंट चलेगा, नहीं तो एस वाले पार्ट में चलेगा. जो भी एस में आपने स्टेटमेंट लिखा हो उसको ये प्रिंट करवा देगा. ठीक, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. सो गो टू द notepad. Right here will example, any one example, like I have an example, like right here, write a program to check whether a number is even or odd. So हम एक नंबर यूज़र से लेंगे, उसको हम चेक करवाएंगे क्या ये नंबर इवन है या ऑड है. ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसको हम चेक करवाएंगे यूजिंग अ इफ एल्स स्टेटमेंट. राइट हियर इफ नंबर इज right number, first I will declare this number variable here, int number, like number is a constant value is 2. So if number mod by 2 equals to 0, then it will be a even number, otherwise it will be not even number. जो भी कोई नंबर मोड हो जाए, इसमें भाग जाए 2 का, तो वो तो इवन नंबर है. प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन.
it's even number. Okay, also provides a number, नहीं तो else. Same as it is this one, copy and paste here. It's not even number, it's odd number, odd number. So here also need a bracket. If you have only one line code, then it will be a not need a bracket. If in this block have a multiple statement, then you need a brackets. अगर आपके प्रोग्राम में एक ही इस ब्लॉक के अंदर एक ही स्टेटमेंट है तो आपको कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो आपको कर्ली ब्रैकेट की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी. सो फर्स्ट चेक. Like number is even. So now goes to the back PDF. Now third one is an else if or if ladder. If else if ladder, you can say the multiple conditions and you will be execute any one. So the if ladder is used to evaluate multiple conditions in this ladder structure. Test condition are evaluated in top to down manners. As soon as a true condition is encountered, the statement associated with gets executed and the rest of ladders is skipped or bypass. If all the conditions are false, the final else statement get executed. The last else act as a default condition. That is, if all the other test evaluations get failed, then the last else statement is executed. So इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा ब्लॉक है, मतलब अभी तक हमारे इफ में एक ब्लॉक था, इफ एल्स में 2 ब्लॉक है. इफ एल्स लैडर में क्या होता है, मल्टीपल ब्लॉक्स, आप एक से ज़्यादा ब्लॉक ले सकते हो. उनमें से भी जो भी कंडीशन ट्रू है वो उस ब्लॉक को वो एग्जीक्यूट करवाएगा, बाकी सब स्किपेड हो जाएंगे, मतलब बाकी सब नहीं चलेंगे. If all the conditions last if else statement, it will be a default condition here. But if here will be a no one condition will be executed true, so goes the else part. Default part is an else. If here will be a no else, then it will be a no. Print any other statement. अगर हमारे पास else statement भी ना हो उस प्रोग्राम के अंदर, it will be a nothing will be a print here. ना तो else वाला पार्ट चलेगा क्योंकि हमारे प्रोग्राम के else वाला पार्ट है ही नहीं, तो कुछ प्रिंट नहीं कर पाएगा. कोई कंडीशन ट्रू ही नहीं है तो कुछ भी नहीं चलेगा. इसको मैं आपको विथ एग्जांपल समझाऊंगा. दिस इज अ सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स लैडर. लाइक इफ कंडीशन 1, then code execute will be condition 1 is true. Else if condition 2, so code of the execution if condition 2 is a true. So this is an else part. Code will be execute if all the conditions are false. And this is a structure. This is a syntax of our if else ladder. So I will show with example. Then you will be easily understand. First goes to back to notepad. Okay. Here I will provide one example here, like any one example. If like which type of example I will write here. Yeah. So here write a program that take 2 numbers and show
greater, smaller or equal message according to the entered वैल्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन है, राइट, अ प्रोग्राम टेक टू नंबर्स, आपके यूजर से दो नंबर लेने हैं, एंड शो ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल मैसेज अकॉर्डिंग टू द इंटर्ड बाय यूजर। मतलब अगर हमारे पास दो नंबर है, उनमें से हमें क्या करवाना है, प्रिंट स्मॉलर, ग्रेटर देन एंड इक्वल, तीनों मैसेज प्रिंट करने के लिए हम इसके लिए लेंगे इफ एल्स लेडर वाला स्ट्रक्चर यूज, वो काम में लेंगे। लाइक इफ नंबर 1 is greater than number 2, simply provide a message number 1 is greater than number 2. Same as in this copy one. Here I not need a variable, simply message number 1 is greater than number 2. Else if, so here will be a number 1 is a less than number 2. Same as it is, copy this line, then number 1 is a less than number 2, and else part, else part, one more else part, here will be a number 1 equals to number 2. Number 1 is equal to number 2. So first number 1 is, first I need to declare variable 2 int num1 comma num2, provide a constant value, like here will be a 2, here will be a 3. So which one will be executed? First, number 1 is greater than number 2? No. Number 1 is less than number 2? Yes. This one will be executed. Then here will be else part. No. Here will be a control D right here. No one condition will be executed. ठीक है, number 1 is less than number 2. So here will be a, this one block will be execute if I change here number, like number 3. Number 1 is equal to number 2. If I
will be change this value 4 and this one be a 6. So number 1 is greater than number 2. Yes, number 1 is greater than number 2. If I write a 0 and here will be a nothing here, so check what will be a error. Variable might be have a initialize here need like a -1. So what will be, which one condition will be executed? Let's check. Number 1 is greater than number 2, because number 1 will be a 0, it is a -1, so the 0 will be greater than -1. This is a if else ladder. So I hope you will be understand how to use a decision making statements. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उनको एक बार खुद से करने की कोशिश कर लेना. So this is all today's section. If you are really enjoyed these videos, please share these videos with your friends and subscribe my channel. Thank you for watching this video.